हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग जीएस घोरे को स्टडी किए थे। सो टुडे विल डिस्कस अनदर एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, एवरीबॉडी नोज इट, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास, उनके जो पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। बेसिकली ही वाज फ्रॉम मैसूर and belonged to a Brahmin family. The important part that how the study of M.N. Srinivas became like a Bible of Indian sociology for generations, and the way he delivered that traditional society into an approach, so that became one of the important aspect of Indian society's study of Indian society. आप इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानिए, इनको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मानिए, बट इनकी जो वर्क है दैट हैज डेप्थ मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द important aspects of the village study or caste study or many things he has studied uh, from South Indian perspective as well as uh, generalized way of अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। इनकी कितने सारे बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स आपको जरूरी है याद रखना। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स बाय एम एन श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2013 में दोबारा इसको रिपब्लिश किया। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, 1998 में इन्होंने ये बुक लिखा था। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966, एंड अनदर इम्पोर्टेंट बुक द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, dimensions of social change in India. So these are the major contributions of M.N. Srinivas. Beyond this, there are many articles, many writings that is available for all sociology and other interdisciplinary studies of Indian society. Srinivas को हम structural functionalism because his work is very much related to the idea of Redcliffe Brown. The way he wanted to study the social life that has a relationship with very much close to Evans Pritchard and Redcliffe Brown. M.N. Srinivas अपने काम ये दोनों टीचर्स या सुपरवाइजर से सुपरविजन से किया था। रेडक्लिफ ब्राउन से शुरू किया था, जब वो रिटायर्ड हो गए अगेन इवेंस प्रिचार्ड से काम किया, एंड इवेंस प्रिचार्ड एंड रेडक्लिफ ब्राउन बोथ आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट prominent and eminent anthropologist. Then the approach of Redcliffe Brown's, that is structural functionalism जो approach है, उस approach में उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के प्रयास किए हैं। सो बेसिकली हिज वर्क इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडक्लिफ ब्राउन। तो एम एन श्रीनिवास के काम में अगर प्रभाव किसी का है तो माना जाता है रेडक्लिफ ब्राउन, और जिनकी अप्रोच था स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने देखा। रेडक्लिफ ब्राउन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में ही एम एन श्रीनिवास वांटेड टू गिविंग इम्पोर्टेंस टू एज वेल एज सिग्निफिकेंस टू द हिस्टोरिकल एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब सिविलाइजेशन की जो सभ्यता की जो प्रकार्यवाद है, उस बात को इन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस माना, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड द structural functional approach to understand different social laws or social structures. जब हम social laws को समझते हैं from M.N. Srinivas perspective, then how the historical data became an important to understand the social function. जब भी सामाजिक प्रकार्यवाद की बात करते हैं तो एम एन श्रीनिवास की पर्सपेक्टिव में जो ऐतिहासिक डाटा, हिस्टोरिकल डाटा है, दैट बिकेम एन इम्पोर्टेंट डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड the scientific laws of social change.
सो श्रीनिवास सिर्फ स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड के माध्यम से मीनिंग्स या कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, उसके अलावा भी उन्होंने उसके ऊपर जाके भी उन्होंने काम किया। एंड हिज कंट्रीब्यूशंस लाइक डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, all were important part of his studies. जब हम एम.एन. श्रीनिवास के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सो डोमिनेंट कास्ट को पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन को और वेस्टर्नाइजेशन, ये तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एम.एन. श्रीनिवास कंट्रीब्यूशंस। ये तीन कंसेप्ट के अलावा इन्होंने इंडियन सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है, अग्रेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, अग्रेरियन सोसाइटी के इनइक्वालिटीज, एथनिसिटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सारे चीज को भी उन्होंने स्टडी किया है। एंड हाउ द आइडिया ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स बिकेम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। तो श्रीनिवास जो उनकी स्टडी के माध्यम से सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स, जो प्रोसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया और अदर कंट्री के साथ भी उन्होंने रिलेट करके देखा। जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या जो भी हमारी पड़ोसी कंट्री, अदर कंट्री के साथ डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी किया है। दैट मीन्स कंपैरेटिव स्टडी टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रोसेस एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी। सो एम.एन. श्रीनिवास की कंट्रीब्यूशंस इंडियन सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कंसेप्ट जो आज भी हम लोग सारे कास्ट को या इंडियन सोसाइटी या विलेज स्टडी में पढ़ते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर उनके और कंट्रीब्यूशंस जो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ढाल सर क्लासेस। थैंक यू।